Canadian channel. Hi, this is Priyanka Chopra and you're watching Channel Y. The biggest South Asian media group, Y Media. Y Media. Y Media has newspaper, midweek, radio, South Asian Pulse. Hi, I'm Amitabh Bachchan and you're listening to South Asian Pulse. Hi, this is Amir Khan and you're listening to South Asian Pulse. अब हर दिन सुने GTA का नंबर 1 रेडियो स्टेशन FM 91.9. You are watching Channel Y. Channel Y. Prime Minister, welcome. It's a pleasure to be here. It's a pleasure to be back. Online, SouthAsianDaily.com. The biggest South Asian media group, Y Media. हेलो एवरीवन, माय नेम इज युद्धू जसवाल. आई एम द ग्रुप एडिटर एट वाई मीडिया. वाई मीडिया ग्रुप की तरफ से आप सभी का चैनल वाई, रेडियो वाई और वाई प्लस पर बहुत बहुत स्वागत है. टुडे वी हैव अ वेरी प्रोमिनेंट पर्सनालिटी विद अस एट वाई मीडिया स्टूडियोज. वी वुड लाइक टू वेलकम द फॉर्मर कैबिनेट मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड द सन ऑफ आवर सेकंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, लाल बहादुर शास्त्री जी, अनिल शास्त्री जी. अनिल जी, अ वेरी वार्म वेलकम ऑन बिहाफ ऑफ वाई मीडिया. सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है. वेलकम सर. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू. वेलकम सर. अनिल जी, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम योर जर्नी. हम सब जानते हैं कि भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे और गांधीवाद में बहुत वो विश्वास रखते थे. सो जरा हमें थोड़ा सा बताइए कि आज जब हम लीडरशिप को देखते हैं तो कहीं ना कहीं, सभी में नहीं पर कुछ लीडर्स में, वो आदर्श मिसिंग नजर आते हैं, वो जज्बा मिसिंग नजर आता है जो लाल बहादुर शास्त्री जी और उन लीडर्स में हुआ करता था. देशभक्ति का वो जज्बा, वो आइडियल्स, वो आज क्यों मिसिंग है? ऐसा क्यों हो गया आज? देखिए, ऐसा है कि समय के साथ परिवर्तन आया है, हमारे समाज में आया है और इसलिए हमारे देश में भी आया है. और ये केवल यही नहीं, भारत में नहीं, बल्कि विश्व के दूसरे मुल्कों में भी ऐसा परिवर्तन देखने को मिला है. एंड व्हाट आई लाइक टू से इज दैट इंडिया इज गोइंग थ्रू अ ट्रांसफॉर्मेशन. Certain transformations are for the better and certain transformations are not for the better. And जो चीज मुझे ठीक लगती है कि वो ठीक नहीं हो रही है, जो हमारे एक नैतिक मूल्य हुआ करते थे लाल बहादुर शास्त्री के समय या उससे पहले, वो नैतिक मूल्यों में कमी आ गई है. हमारे आज के जितने भी राजनेता हैं उसमें सभी शामिल है, मैं भी शामिल हूँ. जितने भी पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनमें वो वैल्यूज नहीं है, उन वैल्यूज की वो बात नहीं करते हैं जो आज से 25-30 साल या 40 साल या 50 साल पहले हुआ करती थी. लेकिन मेरा ऐसा भी मानना है कि हम मंथन के दौर से गुजर रहे हैं और इट मे नॉट बी फार वेयर थिंग्स वुड इम्प्रूव. जैसे कि मैं ये एक एग्जाम्पल देना चाहता हूँ कि आज से 20 साल पहले अगर मुझसे को पूछता कि भारत में क्या कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या कोई मंत्री जेल जा सकता है, तो मैं यही कहता कि बड़ा मुश्किल है. लेकिन हमने 20-25 साल में देखा कि मुख्यमंत्री, मंत्री और सांसद, मेंबर्स पार्लियामेंट, एमएलएस वगैरह और बड़े बड़े लोगों को भी जो है वो सच्चाई का सामना करना पड़ रहा है. और अगर वो गलत काम कर रहे हैं तो वो पब्लिक की नजर में आ रहा है. इसमें मीडिया का एक बहुत अहम, बहुत ही इम्पोर्टेंट और एक पॉजिटिव रोल देखने को मिला है, जो कि हालांकि जो लोग इसके शिकार होते हैं वो इसको मीडिया ट्रायल कहते हैं. लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि किसी भी लोकतंत्र में
अगर हमको लोकतंत्र को मजबूत रखना है, उसको कायम रखना है, तो मीडिया का एक बहुत बड़ा रोल होता है। और मैं समझता हूँ कि इस ट्रांसफॉर्मेशन में मीडिया का एक बहुत बड़ा योगदान रहा है, हमारे जुडिशरी का भी बहुत बड़ा योगदान रहा है। और जहां जहां ऐसा देखने को मिला कि गलत काम हुआ, जुडिशरी तुरंत उसमें आगे बढ़ के उसने एक फैसला लिया, सो मोटो फैसला लिया। ये जरूरी नहीं है कि PIL कोई डाले या कोई कोर्ट में केस करे, but judiciary has taken cognizance of certain major issues suo moto without being referred to them by by any quarter. तो इससे सब मुझे ऐसा लगता है कि though the situation is bad in terms of value systems, जो वैल्यूज हम जो मूल्यों की बात करते हैं उसमें कमी आई, गिरावट आई, उसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन साथ साथ हम ये भी देखें कि जो इन मूल्यों को नहीं मानते हैं और गलत काम करते हैं और खासतौर से भ्रष्टाचार में लिप्त हो जाते हैं, वो बच भी नहीं पाते, ना जनता के नजरों से, ना मीडिया के नजरों से, ना जुडिशरी के नजरों से। तो ये इसको देखते हुए मैं यही कहूंगा कि ये परिवर्तन का एक ही झोंका है। और इसमें कोई शक नहीं, लाल बहादुर शास्त्री के समय पे जिन्होंने एक रेल दुर्घटना के बाद इस्तीफा दे दिया था अपनी नैतिक जिम्मेदारी को समझते हुए, आज तो कोई इस्तीफा देने की बात तो दूर रही, कोई अगर प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री अगर उनको इस्तीफा देने को कहें तब भी आसानी से लोग इस्तीफा नहीं देते हैं। जी। एंड हम ये जरूर बात करना चाहते हैं कि लाल बहादुर शास्त्री जी, उनके बारे में ये कहा गया कि उनके पास अपनी कार लेने के पैसे नहीं थे और 12,000 की कार थी उस समय और 7,000 बैंक अकाउंट में था या 5,000 था और बाकी का पैसा उन्होंने किस्तों पर लिया पंजाब नेशनल बैंक से। ये हकीकत है, मैं आपसे जानना चाहूंगा ये क्या कहानी है? हाँ, बिल्कुल ये सही है, क्योंकि शास्त्री जी मंत्री रहे लेकिन उन्होंने परिवार के लिए कोई कार नहीं खरीदी। और जब वो प्रधानमंत्री बने तो मैं और मेरे दो छोटे भाइयों ने उनसे रिक्वेस्ट किया कि अब तो आप प्रधानमंत्री हो गए हैं, हमारे लिए कार खरीदिए। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, मैं आप लोगों को डिसअपॉइंट नहीं करूंगा। एंड देन ही आस्क्ड हिज प्राइवेट सेक्रेटरी टू फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ अ न्यू कार। उस समय फिएट कार का दाम 12,000 रुपए हुआ करता था। और लेकिन उन्होंने, उनके सेक्रेटरी ने बताया कि उनके बैंक में केवल 7,000 रुपए हैं। तो शास्त्री जी ने 5,000 रुपए का कर्ज पंजाब नेशनल बैंक से लिया था, जो पंजाब नेशनल बैंक के रिकॉर्ड में अभी भी है। और उनका निधन हो गया ताशकंद में पाकिस्तान से एक समझौता करने के बाद 11 जनवरी 1966। तो उसके बाद इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी, तो उन्होंने मेरी माँ ललिता शास्त्री से कहा कि ये जो कर्ज है, लोन है, इसको हम माफ कर देंगे। लेकिन ललिता शास्त्री ने कहा कि नहीं, मैं अपने पेंशन से इसको पे करूंगी, रीपे करूंगी, क्योंकि इस कार से शास्त्री जी के जो वैल्यू सिस्टम्स हैं, उनकी ईमानदारी, वो इससे जुड़ी हुई है। तो मैं इस कर्ज का भुगतान नहीं करूंगा। और ऐसा ही हुआ। मेरी माँ, हम लोग तो उस समय स्कूल में पढ़ते थे, लेकिन मेरी माँ ने अपने पेंशन से उसको लोन को रीपे किया। और मुझे ये बताते हुए बड़ी खुशी होती है कि वो कार परिवार ने लाल बहादुर शास्त्री स्मारक, जो संग्रहालय केंद्र सरकार ने, भारत सरकार ने दिल्ली में बनाया है, उसमें उसको रखा गया है। द कार हैज बीन exhibited and it is a star attraction for all the tourists who come and visit the Lal Bahadur Shastri Memorial. Whenever there is Independence Day being celebrated at one end, there's always a debate. Have we really got the freedom that our freedom fighters aspired for? Is India a real democracy, as much as there's a claim that yes, India is the largest democracy on this planet? So what's your take on freedom and democracy as far as India is concerned? First of all, let me wish all of us 70th
anniversary of India's 75th anniversary of India's independence, and we are all proud to be Indians. We are all proud to have unfurled the national flags at our offices and at our residences today, and it's a matter of great privilege that we are born in this great nation where great men like Mahatma Gandhi, Maulana Azad, Lal Bahadur Shastri, Jawaharlal Nehru were also born. So it is a matter of great pride. And yes, your question about freedom and democracy, no doubt, India is the largest democracy in the world, and quite likely it is going to be the largest populated country in the world as well in a few years from now. तो मैं समझता हूँ कि एक हमारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उन पर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है. When we talk of democracy, democracy means what? I mean, what we read in school was democracy is a democratic government, is a government by the people, of the people, and for the people. लेकिन मैं समझता हूँ इससे कहीं ज्यादा है. आज सबसे जरूरत है इक्वालिटी और इक्विटी की. हमारा देश एक ऐसा देश है जहाँ पे कई समुदाय, कई मजहब, कई जाति के लोग यहाँ पे रहते हैं, बसते हैं, और हजारों सालों से वहाँ ये रहते हुए आए हैं. डेमोक्रेसी मैं समझता हूँ सही माने में तब होगी जब सभी समुदाय और जात के लोगों को जो हमारी ग्रोथ है, हमारी जो उन्नति हो रही है, जो देश तरक्की कर रहा है, इस तरक्की, इस ग्रोथ में उनकी बराबर की हिस्सेदारी होनी चाहिए. अगर हम 100 रुपए कमाते हैं तो ठीक है, कोई 20 रुपए ले जाता है, कोई 30 रुपए ले जाता है, लेकिन कुछ ऐसे हैं जिनको 1 रुपया भी नहीं मिलता. ये डेमोक्रेसी नहीं है. डेमोक्रेसी ये है उसको भी कुछ मिलना चाहिए. कोई ले जाए 50% ले जाए, लेकिन बाकी 50% जो है वो हमारी व्यवस्था इस तरह से होनी चाहिए, पॉलिटिकल सिस्टम ऐसा बनना चाहिए कि डेमोक्रेसी का जो सही माने है, जिसकी बात गांधी जी ने कही थी कि हमारे देश में कई ऐसे लोग हैं, कई ऐसे गरीब हैं जिनके आंखों में आंसू हैं और हमें इन आंसुओं को पोंछना है. And 75 years after independence, we have to ask ourselves, and we expect honest answer from each one of us, whether we have been able to achieve what Gandhi ji had envisaged and the vision that he had in his mind. I would say not as yet. It's because of vote politics. Yes, you give representation to certain people here and there, but that is not enough. They have to be the decision-making people. If you give reservation and on account of reservation you make somebody a minister or a member of parliament, or for that matter governor or chief minister, but that is not enough. That is not the definition of democracy. A person who belongs to a weaker section in India must also enjoy power. He should be involved in the decision making process. The decisions are taken by those who have got everything, but the have-nots have still not been involved in the decision making process. And let me tell you, the majority of the people in India are still, they all belong to the have-not category. Lekin it is a dichotomy. There are people who have got everything are today deciding about the poor of this country, which is again, as I said, a dichotomy. And this is not the definition of democracy in my mind and in my eyes. So this is exactly what I want. You talked about freedom. Freedom is, yes, not only freedom of speech, it is freedom of religion, freedom of attire, freedom of education,
and freedom of accepting uh, or having an allegiance to a political party. और ये फ्रीडम अगर हम हमारे पास ये है, ये स्वतंत्रता हमारे देश में, इसमें मैं जरूर मानता हूँ कि काफी हद तक हम इसमें सफल हुए, क्योंकि आपने फ्रीडम और डेमोक्रेसी की बात कही. बोथ गो टुगेदर, बोथ गो टुगेदर. It is only when the roots of democracy are strong that the people, the freedom, as it has been mentioned or it has been enshrined in the Constitution of India. And so it is both, the freedom and democracy have got to go together. Right. And at this point, I would also like to ask you, where do you see India at the world stage today? We've seen China progressing quite well, Russia struggling a bit, US still, we could arguably say, still a superpower. Where do you see India at the global stage today, and what does the future holds for India? I couldn't get your question. I think there was little break. Yeah, I'll repeat that. I'll repeat that. Where do you see India at the global stage today? Because we've seen China progressing very well in the past years or so, and then US is arguably still the superpower. Russia is struggling. So, where do you see India today, and what does the future hold for India? I think India definitely is a global identity, global power, and the world is taking India lightly. The world is not taking India lightly. And some years ago, when there was recession across the globe, India was not as badly affected as other countries, including China. And that was because China's uh, domestic production, 70% what they produce is exported, and only 30% is consumed domestically. And it is just the other vice versa in India, that 30% exported of our total production, 70% is for domestic consumption. And therefore, China was affected badly in the last recession about 20 years ago because their exports went down. That did not happen in India. Yeah, India today has emerged as a major economic power, political power, and military power. And therefore, as I said, whether it is China, whether it is Pakistan, whether it is some other countries, other neighboring countries, or countries in the West, America or Canada, they are not taking India lightly as it was many years ago. Today, India is taken seriously and it has surely emerged as a major global power. Yeah, I think, yeah. Can you hear us? I think there's some connection. Hello, Anilji. Hello, sir. Sir, can you hear us? हेलो. जी, अब बात करते हैं थोड़ी सी जो बीजेपी की सरकार आई है, ये पिछले लगातार 2 बार उनको बहुत स्ट्रांग मैंडेट मिला है. कांग्रेस को जगह मिलती नजर नहीं आ रही है पिछली 2 बार, और अगर हम बात 2024 की भी करें, सबकी निगाहें 2024 पर हैं. सो क्या लगता है आपको, स्थिति क्या है भारत के जो लोग हैं? 2014 2019 में लगातार स्ट्रांग मैंडेट में, अभी रिसेंटली कल एक और सर्वे आया था, उस सर्वे में भी देख रहा था कि आज भी बीजेपी, नीतीश कुमार के जाने के बावजूद बीजेपी अभी भी स्ट्रांग नजर आ रही है. इसका क्या कारण आप देखते हैं? देखिए, ऐसा है कि अभी कह नहीं सकते हैं, 2024 में समय है, और मैं समझता हूँ कि हमारी जो डेमोक्रेसी इतनी वाइब्रेंट है कि हर दिन कुछ ना कुछ नई बात होती है, और मुझे इसलिए लगता है कि 24 की भविष्यवाणी आज नहीं की जा सकती है. जरूरत इस बात की है इस समय कि ऑपोजिशन को यूनाइट होना होगा अगर वो बीजेपी से लड़ना चाहते हैं.
क्योंकि इसमें कोई शक नहीं कि नरेंद्र मोदी जी इस समय एकमात्र ऐसे लीडर हैं पैन इंडिया लेवल पे जो जिनको लोग वोट करना चाहते हैं, जो वोटर्स को आकर्षित करते हैं। और ऐसी परिस्थितियां निर्मित हुई हैं, इनको देखते हुए आई एम सीइंग द सर्कमस्टेंसेस इन व्हिच वी आर एट प्रेजेंट, there is need for an opposition unity and somebody has got to take the lead. I remember that in 2003, Congress Party had a shiver, had a civil meeting amongst Congress leaders and workers in Shimla, and Mrs. Gandhi, Mrs. Sonia Gandhi, gave a clarion call to all the opposition parties that let us unite and fight the ruling establishment. And they heeded to her call, and all opposition parties got together, including the left and some of the regional parties. They joined hands, and United Progressive Alliance was formed, and we formed the government. And in 2009, though the left parties withdrew the support, our number, Congress Party's total strength in the Lok Sabha went up than what it was in 2004. So I think the need of the hour is to have a strong opposition. And this, I am not saying as a Congress person, even Nitin Gadkari, a cabinet minister in Mr. Modi's cabinet, in the Modi's Union Council of Ministers, also stated some weeks ago that there was need for the Congress to be strong. India needs a strong Congress party. This is what Mr. Nitin Gadkari said, the minister, because he believed that if democracy has to thrive, it can thrive only if you have a strong opposition. And that is what there are regional opposition parties, there are regional parties which are fighting the BJP, like Mamta did in West Bengal, and they have succeeded. In the south also, we have seen there are all regional parties in power, whether it is Andhra Pradesh, whether it is Telangana, or whether it is Tamil Nadu. And Kerala, of course, is won by the left. So even Odisha also, you have Biju Janata Dal. So BJP also has come to this stage, to this number in the Lok Sabha. When we talk of numbers, it has come to this number only after joining hands with other opposition parties in 1989. Until 1989, they had only 2 seats in the Lok Sabha. But then they joined hands with the Janata Dal and some other parties as well, and from 2 seats they went up to 88, and of course then there was no looking back. So I think in the interest of our nation, in the interest of our democracy, in the interest of our people, of our country, it is important parties must get together. Of course, there is a big question mark as to who would build the cat and who would be the most acceptable leader to unite and lead the opposition onslaught against the BJP. ठीक है। इस पे 3 अहम सवाल हैं। एक तो ये है कि जब मैं देखता हूं कांग्रेस के लीडर्स की तरफ, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, आप अनिल शास्त्री जी, आपके पास इतना ज्ञान है, फिर उसके बाद शशि थरूर जी, मणिशंकर अय्यर जी, सैम पेट्रोडा जी, सलमान खुर्शीद साहब, लिस्ट इतनी लंबी है कि सारा प्रोग्राम ही हमारा खत्म हो जाएगा। लेकिन उसके बावजूद आप कहते हैं कि कांग्रेस बाकी पार्टियों के साथ यूनाइट हो जाए, आप कहते हैं कि ये बीजेपी धर्म की राजनीति करती है। बट मेरा सवाल ये है कि इतनी बड़ी इंटेलेक्चुअल स्ट्रेंथ होने के बावजूद विजन क्या है कांग्रेस के पास? व्हाट इज द नैरेटिव
with the Congress, and that whatever narrative you've been presenting in the past that has not been resonating with the common masses, it seems pretty much alien to the Indian masses. अब क्या नया क्या है कांग्रेस के पास, विजन ऑफ इंडिया क्या है, वो मैं थोड़ा समझना चाहता हूँ, और आई एम श्योर के एनआरआईज भी और भारतीय नागरिक भी इसको समझना चाहेंगे। जी सर। देखिए, ऐसा है, जहां तक विजन है, विजन तो पहले से ही महात्मा गांधी ने कहा है, जवाहरलाल नेहरू ने दिया है, तो नया नया को सवाल उनका नहीं है। गांधी ने 20 में भारत को आजाद की थी, और हम 20 उनका आईटी रेवोल्यूशन जो है वो गांधी की शुरुआत थी। ग्रीन रेवोल्यूशन लाल बहादुर शास्त्री की शुरुआत थी। You can't be changing your altering every now and then. BJP actually, that's why they are talking of vision. But what is the vision of that day? The government, the Union Council of Ministers, does not have a single member in the cabinet. Now, if this is what the BJP is talking about, its vision, then I think I, as well as so many people, like-minded people like me, would definitely accept this as part of the involvement of people. We are talking of power. You may call it appeasement politics. No, it's not appeasement politics. It's a fact that today Union Council does not have even one Muslim minister, and the country population of close to 20 crore, of this, which is the second largest number in the world. Now, so our vision is very clear. Our vision is what is enshrined in the Indian Constitution. हमारा विजन वो है जो महात्मा गांधी की बात थी, विजन वो है जो हमारे दूसरे महापुरुषों के जिन्होंने देश की आजादी की लड़ाई की लड़ी, वो हमारा विजन है। हमारा विजन ये है कि हम अपने देशवासियों भेदभाव के उनको अपनी उन्नति में ग्रोथ में हम बराबर उनको शामिल कर उनको इन्वॉल्व कर सके, ये हमारा विजन है। Once again, some issue in the connection. हेलो, अच्छा जी, अब बात करते हैं अब बात करते हैं एक जो नई पार्टी आई है, आम आदमी पार्टी। और आम आदमी पार्टी ये दावेदारी कर रही है कि दे आर द नेचुरल ऑपोजिशन टू बीजेपी नेशनल लेवल पर। मेरा भी ये मानना है कि एक नहीं, कम से कम 3 नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज होनी चाहिए। तो बीजेपी बड़ी स्ट्रांग है, तो कम से कम 2 तो हमें चाहिए। और लेकिन आम आदमी पार्टी कह रही है कि अब कांग्रेस खत्म, कांग्रेस पीछे है। आम आदमी पार्टी खासकर पंजाब जीतने के बाद उनका यह दावा है कि वी आर द नेचुरल ऑपोजिशन एट द नेशनल लेवल, और आम आदमी पार्टी कह रही है कांग्रेस को भी अब पीछे छोड़ दीजिए। आपका क्या कहना है इसके ऊपर? देखिए, आम आदमी पार्टी भी एक अपॉर्चुनिस्ट पार्टी है, और वो कभी तो उनका जो ट्रेंड रहता है वो ऐसा लगता है कि वो बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं, और कभी ऐसा लगता है कि वो बीजेपी के खिलाफ है। तो वो मौका देख के अपनी बात करते हैं, चाहे वो अरविंद केजरीवाल हो या कोई और उनके पार्टी के नेता हो। आम आदमी पार्टी, कोई संदेह नहीं है, देयर इज नो डाउट दैट दे डिड प्रीटी वेल इन दिल्ली in 2 elections, assembly elections, and they did well in Punjab as well. And that was primarily because of the weaknesses in the Congress party in both these states. And it is a warning signal to the Congress party, no doubt, with the emergence of the Aam Aadmi Party, that we have to set our house in order. And I can assure you that our leadership is leaving no stone unturned to set things right wherever they find that it is not right, it's not being done in the right way. And you must have heard that from 7th of September,
the Congress Party is starting Bharat Jodo Yatra, and from Kanyakumari to Kashmir, and Rahul Gandhi and senior Congress leaders and workers across the country will be joining in during the course of the yatra. So we are sending a message. You know, our line is very, very clear. You talked about vision, you talked about ideology. We have always believed that in particular. What do you see as the future of economy at the global level, and where do you see India in terms of as an economic superpower? well, things are pretty bad in other. If you talk about the labor, Sri Lanka is in a bad shape. Pakistan is in a bad shape, and Nepal some years ago was in a bad shape, and even in Europe also, England, the railway drivers and the railmen, they have all gone on strike, causing great inconvenience to the people because again, the fact that their salaries were not commensurate with the rise in prices of essential commodities. This is what they have said. So that way, India is much better off. And but as I said, India has a major problem that 30 crore of a people are still of the have-not category, which is indeed serious. And it's only 30 crore of the total population which is getting all the benefit. I'm talking of the middle class, 30 crore middle class people. You know, almost every middle class. I remember that way back in 1969, as a student, when I went to America, the definition I asked, what is the definition of a middle class in America? And then they said that an average American family would have two cars, a color television, refrigerator, a freezer, washing machine, and whatnot, and of course a house. And so I said to myself that this perhaps in India would be possible after 100 years. But well, I was wrong because it took much earlier. Now, the definition of a middle class, I'm talking about 30 crore people, is that the majority of them would have, if not two, at least a car, a vehicle, a refrigerator, an air conditioner, a washing machine. I mean, these are common things. Even an office clerk in the government of India or in a private company also has a refrigerator or a washing machine or a car or maybe a scooter or a bike. So we are progressing. We are progressing, but we are not taking along with us those 30 crore people who I categorize in the have not place. एक मीडिया की बात बड़ी होती है कि मीडिया आज़ाद नहीं है। आपसे सीधा सवाल है कि क्या इंडिया में आज मीडिया आज़ाद नहीं है, क्योंकि क्रिटिसिज्म तो आज देश के प्रधानमंत्री का भी किया जाता है और कांग्रेस के जितने भी लीडर्स हैं वो खुल के प्रधानमंत्री की क्रिटिसिज्म कर सकते हैं। स्टेट लेवल्स पर चीफ मिनिस्टर से हर मीडिया जो है मैं देखता हूँ सवाल पूछता है, और यहाँ बैठे हमें भी कभी किसी ने नहीं कहा। सो आप खुल के बात करिए, मीडिया आज़ाद है कि नहीं, भारतीय मीडिया जो इंडिया में चल रहा है। देखिए, ऐसे टेक्निकली तो मीडिया आज़ाद है ऑन पेपर, तो उन पे कोई रोक नहीं है, लेकिन कहीं से गवर्नमेंट का प्रेशर उन पे है, ऐसा लगता है। किसी तरह का कोई डर उनके मन में पैदा किया जाता है, जो ऐसा एहसास होता है, पर ऐसे इसका कोई एविडेंस नहीं है, कोई प्रूफ नहीं है। या तो सीबीआई का डर हो, या एनफोर्समेंट का डर हो, या इनकम टैक्स का डर हो, क्या है ये मैं नहीं कह सकता हूँ। लेकिन ये आई एम प्रीटी श्योर सम काइंड ऑफ फियर in the minds
of the media fraternity, which is perhaps refraining them from taking the government head on. And what surprises me is that, well, you need not take the government head on, but at least you what the opposition have to say against the government. That is also not happening uh, often. And therefore, I could say, well, as I said, technically on paper, there is no bar. Anybody can write anything that he or she wants to. But it seems the way the news is reported in the newspapers or in the electronic media, it gives impression to people, to me and people at large also, that there is some kind of fear in amongst the media people, which is restraining them from writing something against the government. And since you were talking about different community members, should they be accommodated in the cabinet or not? Let's talk about the minorities. In your viewpoint, how does India treat its minorities? Well, let me tell you, Frank, that the BJP also talks about the Congress party having followed the appeasement, but it is all, I think, for namesake. I don't think any community has been appeased by the Congress party, and for us, everybody is equal. Rather, I would say that the minority communities in India, particularly the Muslim minority, has not got what they should have got. I mean, if you take the case, let us say that I'm not talking during the BJP rule, during even the earlier regime also, with the UPA or even earlier, how many Muslim chief secretaries are there? How many Muslim secretaries in the government of India are there? How many chief ministers are there? How many governors were there? I mean, I'm just talking. I mean, so this actually proves my point that when we talk of appeasement, I don't see the appeasement. I think that they have got a raw deal, and they have been continuously getting a raw deal, and it is of course the worst possible scenario today under the regime. Yeah, you mentioning that they have got a raw deal. If I may suggest that yes, as far as the minorities in India are concerned, we just have witnessed a 10-year rule during the Congress regime. I'm sure it was the Congress regime, but then you had a Christian. I do not talk about the backgrounds. I don't want to put any identity, any religious connotation to a political or a elected person. But since we're talking about minorities, and you mentioned the point that that they got a raw deal. We had a Christian person, Sonia Gandhi ji, who was the leader of the ruling party. We had a Sikh Prime Minister, Dr. Manmohan Singh. Then you had a Salman Khurshid ji, who was from a Muslim background, the cabinet minister, the former external affairs minister. The junior external affairs minister was Sikh, and then we had a Christian as the defense minister. The list goes on and on. I mean, for a good 10 years recently, India was ruled almost by minorities. You could hardly find a majority face in the ruling government. That was the case for good 10 years at the national level. Please. No, as I said, of course, it was not that there was no representation, but as I said, and I am repeating that it was not to the extent that it should have been. I mean, this is my personal view, and one may agree with me or may not. That's a different issue altogether. But you talked about Salman Khurshid. Let me tell you that in 2009, there was not even one elected Muslim cabinet minister in the cabinet. Salman Khurshid
was taken later as a Minister of State. But those elected MPs, none of the elected Muslim MPs was made a cabinet minister in 2009. Yes, Rajya Sabha there was, Mr. Ghulam Nabi Azad was there, no doubt. But I am talking, it is now, it's all on record. And I mentioned it at that Yeah. time also. Yeah. No. But they got the representation despite not being elected, and there were many Muslim member parliaments. They have been elected from India. Many Muslim parliaments are elected in India. Many Muslim MLAs are elected in India. Many Sikh MPs are elected in India. Many Sikh. No, no, We no. I witnessed think Sikh. there are many things, and when you talk of many, you have to talk of numbers. Even during the UPA regime, the number of Muslim MPs, Congress Muslim MPs had gone down from what it was in 2004. It came down to 2009, and over the years also it's been coming down. And it is, of course, as I said, it's a worst situation. I'm not saying that uh, but one has to get a position on merit. There's no doubt. But at the same time, it is my view, my opinion. I'm not saying that if they are 15% of our population, you give 15% representation. No. But yes, you at least follow the rule of merit. If you find meritorious, you give them an opportunity, but that is not happening. That is not happening. Now, of course, it has all stopped. But I am talking of earlier years, last 20, 30 years I am talking about. So let's say after 1990, after Rajiv Gandhi was assassinated, and then the situation became worse. Right. So the minorities have even occupied the highest constitutional position as far as India is concerned, whether they were from backward class or whether even a Sikh Yes, president of that India in India. we have, during the Congress regime, yes, Dr. Zakir Hussain was the President of India. Mr. Fakhruddin was the President of India. We have had two Muslim presidents. We have had a Sikh president. That was also in the Congress regime, Gandhi Jail Singh. We have had a Dalit president in Mr. Narayanan, who was a retired Indian Foreign Service officer. But then, when BJP makes a Dalit a president or backward president, it is announced from the rooftop. But when Congress did it, they did it just as a matter of routine that yes, it's nothing to be talked about. And I think perhaps it is there that we failed. If we did so, it was not promoted the manner in which it is being done now. Right. I think we should quickly mention another very prominent person, one of my favorites too, Dr. APJ Abdul Kalam Saab. He was made the president during the BJP regime, the missile man of India. So I think we must Mr. Atul mention. Mr. Atul Yeah. Yeah, it was By during his last regime. Yes. during his team. But there is Last two, last two. there Please. is a vast difference between the regime of Mr. Atul and that of the present regime. आप इसको प्लीज थोड़ा सा क्योंकि मेरे आखिरी दो सवाल है, लेकिन उससे पहले आपने एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट अभी बोल दिया, तो मैं चाहूंगा उसके बारे में जरूर बात कर लें। आप कह रहे हैं कि बहुत बड़ा फर्क है वाजपेयी साहब की जो रिजीम थी, वाजपेयी साहब की जो बीजेपी थी, वो जो सरकार थी, उसमें और अब मोदी सरकार में क्या फर्क है? Yeah, I think I will leave that to you, and because I'm not a BJP spokesman, I can't talk on behalf of the BJP, and you have invited me as a Congress leader, so let us restrict ourselves to Congress politics and other issues concerning India and the people. ठीक ठीक है। आखिरी आखिरी दो सवाल हैं। एक तो ये है कि गांधी परिवार के बारे में डिबेट चलती रहती है हमेशा कि गांधी परिवार जो है वो क्या, क्योंकि लीडरशिप पे सवाल है अब, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर कांग्रेस अच्छा नहीं कर रही है तो लीडरशिप पे तो सवाल उठेंगे। आप क्या क्या कहना है कि क्या गांधी परिवार ही है लीडरशिप में, कोई और लीडरशिप आनी चाहिए, कैसे कांग्रेस को आगे ले जाया जाएगा, ये बताइए। देखिए, ऐसा है कि गांधी परिवार
के अलावा किसी और लीडर की, कांग्रेस लीडर की एक्सेप्टेबिलिटी नहीं हो पाएगी upper rank and file of our party, and the party, the Congress party will cease to exist. तो कांग्रेस पार्टी का नामो निशान नहीं रहेगा अगर इसमें कोई और नेता कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया जाता है, क्योंकि एक्सेप्टेबिलिटी जो है कांग्रेस पार्टी गांधी परिवार की सबसे ज्यादा है, और बड़ा सा बड़ा नेता, छोटा छोटा कार्यकर्ता, वो उनको दे हैव नो हेजिटेशन या नो reservation on having a member of the Gandhi family as the president of the Indian National Congress. And of course, a different matter that although the Congress proposed the name of Rahul Gandhi to be the Congress president, but he like to wait for a while, and I'm sure the Congress election for the Congress president has already a date has been announced, but I think it has to fructify. It will happen soon, and we will have a new Congress president, hopefully from the Gandhi family. So if you are suggesting that the Gandhi family should be at the helm of affairs just to keep the Congress together, don't you think that then the accusations of dynasty politics are once again right, or then they will again question where is the within the party democracy? Does it really exist? This is not only in India. This is, as I said, it's complete South Asia and some other countries as well, including the United States of America also. So it is not. There is no such thing as dynastic politics. Uh, I mean, though the Prime Minister spoke about it from the ramparts of the Red Fort, and I personally feel that maybe some other things he said about the country may be acceptable, but this is not acceptable, to talk politics from the ramparts, use the ramparts of the Red Fort for talking politics. You can talk about your policies and countries, but not about politics. But which he did that today. I was little hurt and I was sad about it. But let me tell you, these, if you call them dynasts, they have been elected by the people. I mean, see, it is not for you and I to decide. It is for the people to decide. If the people don't want him, they will not. If the people want them, then they will get elected. And so let us leave it to the people. Let them decide. I mean, you have Mr. M.K. Stalin in Tamil Nadu. You have Jagan Mohan Reddy in Andhra Pradesh. You have Naveen Patnaik in Odisha. You have Telangana. His son KTR has emerged as the de facto chief minister. Then you have Ajit Pawar and Supriya Sule in Maharashtra, and where not? So, I mean, even Bengal also they are talking of Abhishek Banerjee, the nephew of Mamata Banerjee. So, in Bihar, I mean, it is all open. Now, in Bihar, for example, the last elections in 2020, Tejasvi Yadav polled highest number of seats. He was the single largest party. Ladu Yadav was in jail. So he was elected by the people of Bihar, and people gave him maximum number of seats. Now, how can we talk of dynasty politics? I mean, it is not that the king abdicates and the next his son or daughter takes over. It is the dynast has got to get elected by the party and elected by the people. मेरा So, आखिरी सवाल है और मेरा ये सवाल अनिल शास्त्री जी, उन अनिल शास्त्री जी से है कि जो लाल बहादुर शास्त्री जी के बेटे हैं, और मैं आज
ये कह सकता हूँ कि हम सल्यूट करते हैं महात्मा गांधी जी को और लाल बहादुर शास्त्री जी को। अगर जब हम पढ़े लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में, तो मुझे जो बात महात्मा गांधी जी के बारे में कही गई थी, मैं लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में भी यही कह सकता हूँ कि ऐसे इंसान इस दुनिया पे एग्जिस्ट किए गए हों, हमें यकीन ही नहीं आता। इतनी बातें, उनकी खूबसूरत बातें, इतनी अच्छी बातें मैं पढ़ूं तो ऐसे लगता है कि ये लाल बहादुर शास्त्री जी को काल्पनिक थे कि या सच में, मतलब हमारा सर झुक जाता है। उनके बेटे से मेरा ये सवाल है, मेरा ये मानना है कि 2 नहीं, कम से कम 3 नेशनल लेवल की पार्टीज होनी चाहिए। अब कांग्रेस पार्टी जो है वो एलिगेशंस ऑफ करप्शंस, आपने अभी बात की तेजस्वी यादव साहब की, वहां पर उनकी पार्टी पे करप्शन के एलिगेशंस। जो भारतीय यूथ है आज, हमें बड़ा अफसोस होता है जब इंडिया सिल्वर मेडल लेता है, पीवी सिंधु सिल्वर मेडल लेती है, तो हमें खुशी कम और अफसोस ज्यादा होता है कि हम गोल्ड क्यों नहीं ले गए। इंडियन यूथ डजंट वांट टू प्ले सेकंड फील्ड टू एनीबॉडी, हम नंबर 1 चाहते हैं। उस यूथ को कांग्रेस का क्या संदेश है आने वाले भविष्य में? कैसे आप जोड़ेंगे उस यूथ को? कैसे वो कांग्रेस पार्टी खड़े करेंगे? कुछ ना कुछ तो रेवोल्यूशनाइज करना होगा ना। नहीं, देखिए, यस, थोड़ा बहुत तो रेवोल्यूशनाइज करना ही है, उसमें तो कोई डाउट नहीं है, क्योंकि हमारे कई स्टेट्स में जो है वो संगठन नहीं है, हमारे स्ट्रक्चर जो है वो खराब हो गया है। और उसके कई कारण हैं, अभी हम इसमें डिटेल में डिस्कस नहीं कर सकते हैं। ये एक जो है कि सब जो डेवल्यूशन ऑफ पावर की कमी हुई है, सब चीज जो है यहाँ पे सेंट्रल लेवल पे ही सब तय किया जाता है, जो कि मैं समझता हूँ सही नहीं है, और कई चीजें स्टेट प्रेसिडेंट पे छोड़ देनी चाहिए। और प्रयास ये होना चाहिए, देयर शुड बी एन एफर्ट दैट the PCC, the Pradesh Congress Committee President, should be given full authority to make his team and create an organizational structure at up to the booth level. Our problem is that if I fight an election, I will have to have my own team. It is not that I will get people at the booth level, at the block level, at the district level. We don't have people, committed people. So there is need for people, who are respected amongst the voters. They are sidelined. They are sidelined. And somebody who can never get elected, they are given all the important posts and positions. So this is something which hurts the Congress workers, and they decide to sort of stay back and lie low, which is dangerous for the party. That energy is missing. Priyanka Gandhi did her best in UP. Despite that, the people were not with us and they did not vote. She did try to create a structure, but unfortunately it did not happen for so many reasons. So I think what is important is the leadership has got to give a free hand to once you decide on a person to be the president of the state, it is understood that you have reposed full faith and confidence in that person. If you have reposed full faith and confidence in that person, then let him function the way he wants. Let him make his own team, create his own team, and perform. Give him 2 years of time. And if you do not repose faith and confidence in the person, you think that he is not worth reposing faith and confidence, then don't make him. You make somebody in whom you have full confidence that he will deliver. बहुत बहुत शुक्रिया जी। आने वाले समय में आपके साथ बातचीत इसी तरह जारी रहेगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और बहुत सारे आपके यहाँ, हाँ जी, चाहने वाले हैं, साचा साहब हैं और बहुत लोग हैं। जाने से पहले मेरा सवाल नहीं है कोई, आखिर में आप कोई संदेश देना चाहें साचा साहब, या जितने भी एनआरआईज हैं जो कांग्रेस को आज भी बहुत सपोर्ट करते हैं, आपकी पार्टी को, आपकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, आपका संदेश जाने से पहले। सबसे पहले तो मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ हमारे जितने भी एनआरआईज हैं जो हम मेरी बातें सुन रहे हैं, कि उन्होंने अपना समय दिया, कीमती समय दिया,
मुझे पता है कि यहाँ पे जरूर रात है, लेकिन वहाँ लोग काम कर रहे हैं और 15 अगस्त की यहाँ छुट्टी जरूर है, लेकिन कनाडा में तो 15 अगस्त की छुट्टी नहीं है। लेकिन इसके बावजूद अगर जिन लोगों ने मेरी बात को सुना, मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ और फिर अपने देश की 75th इंडिपेंडेंस की एनिवर्सरी के लिए उनको बधाई देना चाहता हूँ। मेरा यही संदेश है अपने कांग्रेस के भाइयों से और बहनों से कि विदेश में हमारी पार्टी को मजबूत करने का जिस तरह आप काम कर रहे हैं उसको पूरी तरह जारी रखें। मैं देखता हूँ, मैं ऑस्ट्रेलिया गया था, इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के कम से कम 8-9 प्रोग्राम्स उन्होंने किए थे। मैं अमेरिका भी गया और मैं स्विट्जरलैंड गया, हर जगह डेनमार्क गया था और नॉर्वे गया। तो हर जगह कार्यक्रम में देखता हूँ कि आई फाइंड एनआरआईज हु आर associated with the Congress party, they are totally committed, and there is no reason why they should not be able to uh, involve more people and increase the number of Congress supporters to much greater heights. I know it is already there enough, but it's not enough as yet. And this will strengthen the hands of the Congress leadership, whether it's Sonia Gandhi, Rahul Gandhi, or Priyanka Gandhi, and other leaders. And it will give them a lot of encouragement. And when I see conference abroad, when I went to Australia before COVID pandemic situation, and the kind of response that I got, I was so delighted. Yes, कांग्रेस पार्टी हो सकता है कि देश के एक आध डिस्ट्रिक्ट में शायद जिंदा ना हो, लेकिन विदेश में कांग्रेस पार्टी एनआरआईज के माध्यम से पूरे जीवित हैं. They are fully full of life and full of, and they want to do something for Congress party so that the Congress party once again comes back to the seat of power in New Delhi. मैं जाने से पहले विदाउट ब्लरिंग द लाइंस, क्योंकि आज हमें मीडिया में वाई मीडिया को कम से कम 22 साल हो चुके हैं, सो चाहे यहाँ पर कंजर्वेटिव्स या लिबरल हों या इंडिया में बीजेपी है, कांग्रेस है, अकाली दल, आम आदमी पार्टी, वी कैन नेवर ब्लर द लाइंस. पिछले 22 साल का रिकॉर्ड रहा. लेकिन मैं आपको जहाँ शुक्रिया अदा कर रहा हूँ हाथ जोड़ के, वहाँ आपके चरण स्पर्श भी कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे इस बात का अंदाजा है कि लाल बहादुर शास्त्री जी ने भी आपके चरण छुए थे. सो एज अ पर्सन मेरे मन में जो आपके लिए रिस्पेक्ट है, जो आदर है, और आज आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा. मैं आपके चरण स्पर्श कर रहा हूँ, आशीर्वाद दे रहा हूँ और आपका बहुत शुक्रिया अदा कर रहा हूँ. इट वाज अ प्लेयर टॉकिंग टू यू. थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड वी विश यू ऑल द बेस्ट. थैंक यू सो मच. थैंक यू. जय हिंद. जय हिंद. जय हिंद. जय हिंद. You are watching Channel Y. Channel Y, a South Asian Canadian channel. Namaskar, my name is Rajendra Dichpalli and I'm the National General Secretary of Overseas Congress. I would like to wish the viewers of Y Media a very happy Indian Independence Day. This year marks the 75th Indian Independence Day, and it is very special because it reflects the great journey that the country has witnessed in the several decades. I would like to thank Sri Anil Shastri ji, former Union Minister and senior Congress leader, for his time and address to the viewers of Y Media in USA and Canada. Anil Shastri ji is the son of one of the greatest leaders of India and the third Prime Minister, Sri Lal Bahadur Shastri ji, who did great service to the country and also gave a great slogan to the country, Jai Jawan, Jai Kisan. I'm sure Anil Shastri ji will continue to engage with the diaspora and be a great help to the Congress party in India and abroad. Once again, my Independence Day greetings to all the viewers of Y Media. Thank you and Jai Hind. South Asian Canadian channel.